Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss history of biotechnology. In the previous lecture, we have discussed about the definitions or introduction of the biotechnology. History of biotechnology. In this lecture, we will mainly focus on different contribution of different scientists in different periods and in the innovation of the biotechnological procedures and processes. In history, mainly we discuss contribution of a person or a scientist who convinced the world in their specific field by their research. It is important to know about the history of a field to understand different breakthroughs, to know about the different phenomena, different discoveries in their field. आज का जो हमारा फोकस होगा वो हिस्ट्री पे उसकी फेजेस पे हम बात करेंगे। तो मेनली जो बायोटेक्नोलॉजी है ये फ्रॉम द एंशियंट टाइम से स्टार्ट हुई है, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि व्हाट एक्चुअली वाज द मैकेनिज्म इन दैट प्रोसेस। तो हम अपनी आसानी के लिए बायोटेक्नोलॉजी को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज कॉल्ड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी consist of two other phases. Number one, ancient biotechnology and classical biotechnology. Ancient biotechnology from the time of immemorial से 1800 centuries तक जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसीजर्स या जो फिनोमेना इस्तेमाल होते आ रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं था। इट वाज द एम्पेरिकल बेस्ड, हैविंग नो थ्योरेटिकल नॉलेज। तो दैट वाज द ट्रेडिशन, दैट वाज द एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी। और जो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है दैट वाज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोनिज्म की डिस्कवरी के बाद जो माइक्रोनिज्म को हम उसका रोल जो प्ले हो रहा है डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोसेस में या डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, उसको हम क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने मजीद इनोवेट किया, उनमें उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की और रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी को उस पर अप्लाई किया, तो उसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मेनली इट वाज द इनिशियली डेवलप्ड अंडर नॉन स्टेराइल कंडीशंस। लोगों को स्टेरिलिटी के बारे में मालूम नहीं था, और sterile conditions or sterilization is the most important procedure phenomena in biotechnological procedures. बायोटेक्नोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन को बहुत अहमियत हासिल है। अगर बायो स्टेरिलाइजेशन पे हम फोकस नहीं करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कंटेमिनेटेड होगा और वो बहुत से साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है बॉडी में। तो जो बायोटेक्नोलॉजी एंशिएंट टाइम इस्तेमाल करता है उसमें कोई स्टेरिलाइजेशन नहीं थी, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट में माइक्रोनिज्म इस्तेमाल हो रहे थे। जब हमने माइक्रोनिज्म को मॉडिफाई किया, उनमें चेंजेस लेके आए, उनमें इनोवेशंस लेके आए, उसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमने उसको डिस्कस किया, उसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो हम इन दोनों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं, जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना डिस्कस हुए, उनको हमारा फोकस होगा। टाइम लाइन में ये सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस होंगी। Traditional biotechnology, it is also called the conventional biotechnology, that has been used for the time of immemorial from the many centuries. जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है मेनली इट वाज बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल यूज रादर देन थ्योरेटिकल यूज और थ्योरेटिकल नॉलेज। लोग उसको जो है एम्पेरिकल यूज था, कोई लोगों के पास जो नॉलेज नहीं था कि व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन द फर्मेंटेशन और व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी वाज एक्चुअली द किचन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि लोग उस वक्त फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते थे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन से इस्तेमाल होती आ रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें घी है, कर्ड है, वाइन है, बियर है, विनेगर है, ये सारे किचन टेक्नोलॉजी में एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज, नेचुरल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करके प्रोडक्ट रिसीव करना या सर्विसेज रिसीव करना, उसको ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोले। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो है आपकी फाइनेंशियल प्रॉफिट्स के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी हैज एस्टैब्लिश्ड अ ह्यूज एंड एक्सपेंडिंग वर्ल्ड मार्केट इन द फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिहाज से। स्टोरी ऑफ मक्खन चोरी, दैट वाज द मटर स्टीलिंग, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी फेमस स्टोरी बाय द लॉर्ड Sri Krishna during the Mahabharat period. It shows production of butter since ancient times. इस स्टोरी का क्या मकसद है कि जो बटर है फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है, ये एंशिएंट टाइम्स में भी प्रोड्यूस होता रहा है।
breeding of strong productive animals, selection of desirable seeds for enhanced crop production has been part of human activities since the time of immemorial. अपनी मर्जी का जो एनिमल सिलेक्शन है, एनिमल ब्रीडिंग है और डिजायर्ड सीड सिलेक्शन है, ये सारे प्रोसेस एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं. तो इट मीन्स कि बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी मच एंशियंट. During the Vedic period, 5000 to 7000 BC, Aryan had been performing daily Agnihotra, the Arjajana, that is the type of the worship, इबादत को बोलते हैं. इसमें जो मटेरियल यूज करते थे वो एनिमल फैट था, घी था, which was the fermented product of the milk. तो मिल्क से उसको fermentation के बाद वसूल किया. So fermentation used in the ancient times. Divine soma fermented products used in the beverages had been offered to God. Fermented product from the ancient times. Sumerians and the Babylonians were drinking beer. 6000 BC से वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं fermented product. Egyptians were drinking, or Egyptians were baking leavened bread. 4000 BC fermentation. 2000 BC used to prepare vinegar. Egypt, Mesopotamia, and Palestine. The art 15,100 BC, the art of production of wine from the crushed grapes and the beer from the germinated cereals by using yeast was established. Fermentation. Traditional biotechnology, that was a art rather than a science. ये एक art था, ये science उस वक्त सब की जाती थी. Role of microorganism in fermentation, that's the classical biotechnology. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो आगाज हुआ, जो डिस्कवरी हुआ 17th सेंचुरी में 1673 में एंटोनी वॉन लेवनहुक की जानिब से हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद. तो इसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ना वो ज़्यादा फ्लश किया. 1757 में जो मिल्क की प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ उससे गैस इवॉल्व हुई. दैट वाज द फर्मेंट आफ्टर द फर्मेंटेशन इट वाज कॉल्ड द लाइम वाटर टेस्ट. Anthony Levizor gave chemical basis of fermentation. Anthony Levizor ने fermentation की chemical basis दी. There are the chemical that are used, that are enzymes in the fermentations. Frenchman Nicolas Appert described the method of food preservation. And Peter Durand 1810 used 10 कंटेनर फॉर फूड प्रिजर्वेशन. ये 10 कंटेनर्स को फूड के प्रिजर्वेशन के इस्तेमाल किया क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती थी और उसमें एज हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन का होना माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. Galusic reported lack of oxygen in such closed and heated vessels. जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हमने कंटेनर इस्तेमाल किए उसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए. He concluded that oxygen was required for initiation of alcoholic fermentation. Fermentation के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, but not for the progress of the fermentation. Initiation के लिए ऑक्सीजन चाहिए लेकिन प्रोग्रेस के लिए fermentation की प्रोग्रेस के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है. After 1830, Charles B. Stier gave the concept that air is the carrier of all kinds of germs. Air में तमाम type of germs मौजूद होते हैं. Theodor Schwann, after a series of experiments, demonstrated that the development of the fungus, sugar fungus, on the fruit juice causes fermentation. He was the first to observe and describe the yeast in growing process. Growing process ने yeast को first time observe किया. Charles Cogniat Latour observed yeast budding using microscope that was the 300x to 400x उसकी magnification power थी. Justice von Liebig 1839 proclaimed that all the activity of yeast cell was the result of chemical and physical reaction going on in the medium. जो physical और chemical reactions होते हैं उससे fermentation हो रही है. Lewis Pasteur 1857 first report on lactic acid fermentation from sugar. 1860 Pasteur provided a detailed report on use of synthetic medium for microbiological studies के माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए मीडिया का होना जरूरी है. उस जो ल्यूइस पास्चर साहब ने सिंथेटिक मीडिया रिपोर्ट किए थे. Pasteur suggested the process of the pasteurization that the microbial growth can be controlled by heating at 62.8 degrees centigrade. There are different other procedures. 1881, Robert Koch gave the Koch postulates. Edward Buchner first to demonstrate enzymatically mediated fermentation reaction. फर्मेंटेशन रिएक्शन को एंजाइमेटिकली सबसे पहले जो बुकनर साहब ने इसको कंट्रोल किया. ही कंक्लूडेड दैट द सेल फ्री यीस्ट प्लस कंसंट्रेटेड शुगर कन्वर्टेड इनटू द इथाइल अल्कोहल. जो सेल फ्री यीस्ट है इसमें एक एंजाइम है दैट वाज द zymes. दैट्स व्हाई द फर्मेंटेशन आल्सो कॉल्ड द जाइमोलॉजी. तो सेल फ्री यीस्ट प्लस कंसंट्रेटेड शुगर जब उसको मिक्स किया तो उससे इथाइल अल्कोहल बना. तो सेल फ्री यीस्ट में क्या था? जाइमेज एंजाइम था. बुकनर कॉल्ड द सब्सटेंस इन जूस वाज द जाइमेज.
Hans Buchner in 1819, Hans Buchner and the Martin Hahn developed more effective methods of getting cell-free state after disrupting the microbial cell. Microbial cell को डिस्टर्ब करने के बाद उन्होंने जो सेल फ्री स्टेट को आसानी से एक्सट्रैक्ट करने के मेथड्स जो है ना वो डेवलप किया बुकनर और मार्टिन साहब। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो फोकस है जो बेस है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे है। जो जो मालिकुलर बायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसेस आई तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसेस आई कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फोकस करती है जेनेटिक मटेरियल पे और उसके रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे। ओके, कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल फॉर गेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थ्रू रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। जब हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के जरिए हम न्यू प्रोडक्ट लेंगे, जेनेटिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिज्म से कट करेंगे दूसरे में पेस्ट करेंगे, उस समय जो प्रोडक्ट लेंगे उसको बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बेस है। द न्यू एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेनली एक्सेप्टेड ऑल मेथड्स ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए एंड सेल फ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसमें सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी फाउंड इन रीसेंट एडवांसमेंट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी, genetic engineering, and fermentation technology. By the end of the 19th century, the traditional biotechnology served the fermentation was gradually industrialized because of the production of different types of fermented product on industrial scales. उसमें वाइन है, बियर है, विस्की है, ये सारे इंडस्ट्रियलाइज हुए because of the innovations in the modern biotechnology. 1920 में लीड सिटी यूके काउंसिल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि अब बायोटेक्नोलॉजी में 1941 में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का टर्म इस्तेमाल हुआ, 1953 में जो वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए दिया और 1970s में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरीज हुई उनके उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। तो 1920 में लीड्स लीड सिटी काउंसिल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। OECD का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का जो है ना आगाज हुआ 1960s में, दैट इज मेनली रिस्पांसिबल टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। 1978 में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का आगाज हुआ। 20th century biology brought industry and agriculture together. In 20th century 20वीं सदी में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बायोटेक्नोलॉजी ने इकट्ठा किया कि भाई इंडस्ट्री में और बायो एग्रीकल्चर दोनों में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस इस्तेमाल हुए, वो हम एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान एसीटोन वाज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। वर्ल्ड वॉर टू पेंसिलिन प्रोडक्शन ऑन द लार्ज स्केल। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पेंसिलिन को हमने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया और इस की बेस पे बायोटेक्नोलॉजी को हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे फोकस किया कि भाई बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकती है। 1971 में वर्नर अर्बर डिस्कवर स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, एंड एच कोहन in 1973 and Boyer removed a specific gene from bacterium and inserted into another bacterium by using these restriction enzyme. The discovery of the restriction enzyme and the discovery of the recombinant bacteria, these two discoveries are the very important and very big breakthrough in the history of the biotechnology and the history of the genetic engineering and the history of recombinant technology. इन दो डिस्कवरीज के बाद बायोटेक्नोलॉजी और जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसने बहुत तरक्की की। 1976 में बाल्टीमोर सक्सेसफुल ट्रांसफर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन टू रैबिट। 1978 में अब जो अब वक्त गुजरता गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो गए। जेनेटेक यूएस कंपनी यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस इंसुलिन इन इकोलाई। 1982 फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव हेमोलिन मेड बाय इली लिली कंपनी है, हेमोलिन को अप्रूव किया गया। 1982 सोमेटोट्रोपिन वाज प्रोड्यूस ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग टोमेटो फ्लेवर सेवर वर सोल्ड इन मार्केट। 1983 जेनेटिकली जो इंजीनियर पोटैटो था एग्रीकल्चर स्केल में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में उसको सोल्ड किया मार्केट में। फर्स्ट क्लोन बेबी क्लोन लैम डोली वाज द बोर्न सक्सेस 1976। Sequence of Human Genome Project was published. It was completed in 2003. 2002 claim was made for the birth of the clone baby that was the EV. 2005 restriction on the gene cloning in humans.
2005 थेरेप्यूटिक क्लोनिंग मेथड्स टू प्रोड्यूस स्टेम सेल लाइंस, जो इसकी जो आगे 2005 के बाद जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं, मेजर हिस्ट्री है, वो हम टाइम लाइन में डिस्कस करेंगे। तो ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जो बेसिक डिफरेंस है वो यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स बनाए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और एक ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म हमने लेना शुरू किए। तो अब जो टाइम लाइन में हम फर्दर इसको जो मेजर्स हैं अब ट्रेडिशनल में और मॉलिक्यूलर जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी अब तक हमने डिस्कस की, उसमें हमने मेजर जो डिस्कवरीज डिस्कस किया। टाइम लाइन में सारी बातें डिस्कस होंगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 4000 BC में लीवन ब्रेड प्रोड्यूस विद द एड ऑफ द यीस्ट। फिर 500 BC में चाइना फर्स्ट एंटीबायोटिक मोल्ड सोयाबीन कर्ड्स। 100 AD में फर्स्ट इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस इन द चाइना फ्रॉम द पाउडर क्राइसेंथेमम। 1521 Aztec harvest algae from the lakes as a source of food. English surgeon Edward Jenner vaccination procedure, it has been discussed in the microbiological portion. John Misher isolated DNA from the nuclei of WBCs. 1870 breeders crossbreed cottons, developing hundreds of varieties with the superior qualities. 1870 the first clement cord hybrid is produced in the laboratory. Louis Pasteur हम डिस्कस कर चुके हैं। Extended microbe use as a cause of fermentation. Alcohol first used as a fuel motors. Edward Buchner discovered that enzyme discovered from the yeast can convert sugar into alcohol, that was the maize discussed. 1910 Thomas H. Morgan proved that genes carried on chromosomes, important breakthrough है। American pathologist Peter Rouse discovered the first cancer causing virus। 1914 three important distilled chemicals stone, butanol, glycerol were obtained। German used acetone produced from the plants to make the bomb। Alexander Fleming 1928 Fleming accidentally discovered the penicillin। Hybrid corn is commercialized in 1933। 1938 proteins and the DNA studies by X-ray crystallography। 1941 George Beetle proposed one gene one enzyme hypothesis। Linus Pauling described sickle cell anemia। 1942 हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पेनिसिलिन इज मास प्रोड्यूस इन माइक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी नाउ मूव टुवर्ड्स द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। DNA as a genetic material and transformation factor, every macroid and McCarthy experiment। Bacterial combination 1946 Lederberg and Tatum। 1950 first synthetic antibiotic is created। Artificial insemination of livestock is accomplished during frozen semen। Lambda bacteriophage discovered by the Lederberg 1951। DNA model 1953 Watson and Crick, both important। Isolation of DNA polymerase, enzymatic sense of DNA Kornberg ने polymerase 1 को isolate किया। Michelson install experiment था semi conservative, both important experiment। 1958 1960 isolation of messenger RNA। 1961 Marmer and the Doty nucleic acid hybridization technique fish। Jacob and Monod 1961 Opron model। नेरनबर्ग एंड द मेथन इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस का कंसेप्ट दिया। और माइनिंग ऑफ यूरेनियम 1962 पे कंसेप्ट आया। 1973 जेनेटिक इंजीनियरिंग बिगिनिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टैनली कोहन प्रोड्यूस फर्स्ट रिकमेंडेड ऑर्गेनिज्म, हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइब्रिडोमास व्हिच मेक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर फर्स्ट क्रिएटेड। हाइब्रिडोमा ये भी हम डिस्कस करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिंथेसिस को। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल सेल्स। Recombinant human insulin is produced for the first time 1978। 1980s smallpox is globally eradicated। इसको हमने 20 सालों की मेहनत के बाद globally eradicate किया। The US Supreme Court approved the principle of patenting organisms, which allows the Exxon Oil Company to patent an oil-eating microorganism। Exxon Valdez जो accident हुआ था उसमें जो oil degrading microorganisms इस्तेमाल हुए 1980s में। Scientists at Ohio University produced the first transgenic animals by transferring genes from the other animals into mice। These are transgenic animals are transgenic mice। Monoclonal antibodies receive US approval, उसको हमने diagnostic के लिए इस्तेमाल किया। First recombinant DNA vaccine for livestock is developed। The first biotech drug, human insulin produced in genetically modified bacteria, is approved by FDA Food and Drug Administration। Genentech and Eli Lilly developed their product। Genetic markers are found for kidney disease and cystic fibrosis।
इसमें कोई डिस्कस करने की बातें नहीं है, सिर्फ यू हैव टू ओनली यू हैव टू लर्न द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री। इसमें सब आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रख लेने हैं, ज़्यादा रट्टा लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। द फर्स्ट रिकम्बिनेंट वैक्सीन फॉर ह्यूमंस एंड वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी इज अप्रूव्ड 1986 में interferon became the first anti-cancer drug produced through the biotech. 1988 the first pest-resistant corn bt corn is produced, हम डिस्कस करेंगे। The first successful gene therapy is performed on a 4-year-old girl suffering from an immune disorder SCID. Human SCID severe immune immunodeficiency severe combined immunodeficiency उस को ट्रीट किया जीन थेरेपी से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। FDA approved the bovine somatotropin to increase milk production in the dairy cows. FDA 1993 FDA approves betaseron, the first of several biotech products that have had a major impact on multiple sclerosis treatment. Kerry Mullis received Nobel Prize for PCR, discuss करेंगे। The first breast cancer gene is discovered in 1990. 1994 में American are certified polio free by the International Commission for the Certification of Polio Eradications. 1994 first genetic engineering food products approved हुआ। Gene therapy 1995 immune system modulation and recombinantly produced antibodies enter the clinic in the war against the cancer. Gene therapy, immune system modulation या recombinant products जो है हम कैंसर के अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू किए। A gene associated with the Parkinson disease is discovered 1996. The first genetically engineered crop is commercialized 1996. Sheep doli हम डिस्कस कर चुके हैं। 1997 में क्लोन हुई। FDA approved Herceptin. Herceptin is a pharmacological breast cancer drug for the patient whose cancer overexpresses the HER2 receptors. HER2 receptors. 1998 human embryonic stem cell lines were established 1919 में diagnostic test allow quick identification of the bovine spongiform encephalopathy. That was the mad cow disease caused by the prions or Creutzfeldt-Jakob disease. In 2000, Kenya field test its first biotech, for sweet potatoes. Working draft of human genome project completed. 3.5 billion letters completed. FDA approved the Gleevec, a gene target drug for a patient with a chronic myeloid leukemia के लिए imatinib का इस्तेमाल हुआ। EPA Environmental Protection Agency approved the first transgenic rootworm resistance corn. 2002 the Banting and endangered species is cloned for the first time. China grants the world's first regulatory approval for gene therapy products. The Human Genome Project complete sequence of the human genome. UN Food and Agriculture Organization endorses biotech crops, stating biotechnology is a complementary tool to traditional farming methods that can help poor farmers and consumers in developing nations. 2004 FDA approved the first anti-angiogenic drug for cancer, Avastin, approved हुआ। The Energy Policy Act is passed and signed into law, authorizing numerous incentives for the bioethanol development. 2006 में FDA approved the recombinant vaccine Gardasil. Gardasil, the first vaccine developed against the human papillomavirus, and the infection implicated in cervical and the throat cancers. The first preventive cancer vaccine, HPV, recombinant that was the Gardasil. Human papillomavirus. USDA grants Do AgroSciences the first regulatory approval for the plant-made vaccines. FDA approved the H5N1 vaccine, the first vaccine approved for avian flu. 2009 global biotech crop that was acreage reaches to 330 million acres. FDA approved the first genetically engineered animal for the production of recombinant from the human antithrombin. Researchers at the J. Craig Venter Institute created the first synthetic. 2010 scientists created malaria-resistant mosquitoes. 2011 advances in the 3D printing technology lead to skin printing. 3D technology, different organs can be produced by using this 3D technology. XNA, before this we have very much familiar with the DNA and RNA. XNA, that is capable of storing genetic information and then evolving through natural selection. That is the third type of genetic information storage. Successful sequence of the complete fetal genome को successfully sequence किया। 2013 announcement as far a fast and precise new method for editing snippets of genetic code, so-called the CRISPR system. CRISPR, cluster
regulated interspace palindromic repeats. Cluster regulated, a cluster regularly interspace palindromic repeats. It is very important. Gene editing techniques आजकल इस्तेमाल हो रही है. CRISPR Cas9 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको डिस्कस करेंगे in the coming lecture. An international team of scientists reconstructed a synthetic, a fully functional G chromosome. Researchers in Sweden developed a blood test that can detect cancer at an early stage from a single drop of blood. कैंसर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ ब्लड. यूएस बर्कली रिपोर्टेड द स्टेप्स टू मेक मॉर्फिन इन द लैब विद जेनेटिकली इंजीनियर yeast. And scientists discover a new antibiotic that is the teixiobactam. It is used against different types of infection. TB है और जो आपके पास skin infections हैं. Blood stem cells grow in the lab for the first time in 2017. Recently जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें और एडवांसेस आती जा रही हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी दैट इज द साइंस ऑफ द फ्यूचर. बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशन होती रहेंगी और होती जा रही हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियली इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. तो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडे लेक्चर दैट इज द हिस्ट्री, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन द टाइमलाइन. That is the most important from different discovery point of view and different utilization of the use of different biotechnological product in different areas in agriculture and in medicine and industry. Thank you so much. And if you have any question, you can ask your question in the comments. Thank you so much.